Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the chloroplast. Let's start. Students, the plastids, they are double membrane bonded organelles present in plants, and it includes the chloroplast and leucoplast and the chromoplast. Chromoplast chrome से color other than the green, ये plants के अंदर जो color होता है वो chromoplast के ज़रिए है. इस तरह से leucoplast ये colorless होती है और आमतौर पर इसका ताल्लुक storage से है. But here we are concerned with the chloroplast, the green double membrane bonded. अच्छा याद रखिएगा जितने भी plastids हैं सब double membrane bonded हैं, ठीक है. So chloroplast is a double membrane bonded organelle involved in photosynthesis, एक चीज, and imparting green color to the plant. So plant का जो भी हिस्सा आपको green दिखता है, that is due to the presence of these double membrane bonded organelle called the chloroplast. It is found in all green plants and algae. All green plants and algae. Algae के अंदर भी, ठीक है. They have chlorophyll for trapping the sunlight. Chapter number 11, as you know, and absent in animals. It is absent in animals and protozoans and fungi and bacteria. Except for there is a little bit resemblance of the thylakoid membranes, which are present in the cyanobacteria, and they produce amino acids, lipids, which are required for the production of chloroplast membrane. ठीक है, जब ये चूंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है तो इसको जब रेप्लिकेट करना है तो इसको ये मेम्ब्रेन बनानी है, तो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं आपको पता है जो ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है. द लिपिड्स और प्रोटीन्स उसके लिए चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, तो वो यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं. अगर हम इसकी थोड़ी सी शेप के हवाले से बात करें, सो दैट इज ओवल एंड बाय कन्वेक्स, मतलब ऊपर से भी कन्वेक्स और नीचे से भी कन्वेक्स, फाउंड यूजुअली इन द मेसोफिल ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है. मेसोफिल में मौजूद होती है प्लांट्स में. और साइज के एतबार से बात करें सो 4 to 6 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर एंड 1 to 3 माइक्रोमीटर in the thickness, okay. Or if you see under the light microscope, it is the heterogeneous structures with small granules called grana. अगर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखें जो लैब्स के अंदर होती है अच्छी वाली माइक्रोस्कोप्स, तो उसमें ये क्लोरोप्लास्ट जो है जब आप वो हाईली इसको मैग्नीफाई करके देखें तो इसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के साथ रिलेटेड स्ट्रक्चर नजर आता है. सो जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं इसमें दे आर कॉल्ड एज ग्रेना. बट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट कम्स टू बी हैव 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है. उसमें हमें इसके 3 मेजर पार्ट्स दिखाई देते हैं: envelope, thylakoid or stroma. So here is the chloroplast. This is the outer membrane and this is the inner membrane. So it makes the envelope. Okay, तो ये पहला हिस्सा हो गया. दूसरा part thylakoid. So these are thylakoids, which are coin-like structures having some space in them, which is called as interior space, or which is also known as lumen. It has been discussed in chapter number 11, the bioenergetics. और ये thylakoids जो inner membrane है, जैसे these are sacs folded into coin-like structures. Okay. और they are stacked just like the coins, and they are also stacked like the coins. तो ये पूरा जो stack है, ये पूरा एक stack, this complete stack is called granum. Granum. और एक granum के अंदर क्या होगा? There is a pile of, or there is a stock of 50 or 50 plus, at least 50 or 50 plus thylakoids. Okay. Or these are the sites where the grana, the sites for converting solar energy into chemical energy. Okay. मतलब कि ये सारे ग्रेनम, ये एक को ग्रेनम कह रहे हैं, क्योंकि एक नहीं है बहुत सारे हैं, सो इनको ग्रेना कहा जाता है, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं with this parts. These are called as intergranum. ठीक है. It is a non-green part. It is a non-green part. Okay, the non-green part, which is used to connect the. It acts as a connection between the various grana. ठीक है, जो ग्रेना के दरमियान जो कनेक्शन है, it is due to this. इसको लार्ज ग्रेनम भी कहते हैं और इनको स्मॉल ग्रेनम भी कहा जाता है. और इसके अलावा it has got
As you can see, this is a circular DNA. So circular DNA, like the mitochondria, it means it is self-replicating organelle. Clear? That chloroplast is self-replicating organelle. और यहाँ पर छोटे-छोटे आपको ये points नजर आ रहे हैं. These are ribosomes. तो जहाँ पर डीएनए वहाँ पर राइबोसोम भी होना चाहिए, क्योंकि अकेला डीएनए कुछ नहीं करेगा. और जहाँ पर राइबोसोम्स हैं वहाँ पर इसको डीएनए को भी होना चाहिए, क्योंकि अकेले राइबोसोम्स क्या कर सकते हैं. सो बोथ ऑफ देम. सो जहाँ राइबोसोम्स, एक तो याद रखना, दे आर 70s लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया. और इसी वजह से इस ऑर्गेनेल को द ऑर्गेनेल ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन भी कहा जाता है. आपको बताया था अलॉन्ग विद माइटोकॉन्ड्रिया. और इसका फंक्शन दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. सो देयर मस्ट बी सम प्रोटीन्स बीइंग सिंथेसाइज्ड ओवर हियर. और इसके इर्द गिर्द देयर इज अ फ्लूइड. ये आसपास सारा फ्लूइड है, एक कलरलेस फ्लूइड. दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, a colorless fluid which forms major volume of chloroplast. जो मेजर वॉल्यूम है वो इसका क्लोरोप्लास्ट का यही बनेगा, द स्ट्रोमा. और इट्स अ डेंस कलरलेस फ्लूइड which contain grana and proteins and the ribosomes and the circular DNA. Okay, so this is the composition. जहां तक बात है, फिर अब इसके फंक्शन पे भी साथ साथ कर लेते हैं. स्ट्रोमा, दिस इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शंस और Kelvin cycle of photosynthesis. तो photosynthesis दो steps में होती है, dear students. You know, the first step is the light reaction और the light dependent reaction, जिसमें NADPH और ATP बनती है. और दूसरे स्टेप में dark reaction या Kelvin cycle, in which the carbon dioxide is reduced to sugars by using ATP and NADPH2. So this is what occurs in the stroma. और इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेप है, that occurs in the thylakoids, यानी कि ग्रेना या thylakoid एक ही बात है, dear students. चलो यहीं पर इसको मार्क कर लेते हैं. So they have got the photosystems which have photosynthetic pigments and are responsible for the light reactions of photosynthesis, in which ATP and NADPH are formed. तो वो कहाँ बन रहे हैं? The first step of the photosynthesis is being done in the granum. Light energy converted into the chemical energy. This is ATP and NADPH with the help of light, and then that very light will be used. Energy will be used in the second step, which occurs in the stroma, for converting or the reduction of carbon dioxide into the sugars. Okay, and using the energy. और इसके अलावा, dear students, here is one more thing that is related to here the thylakoids, which have chlorophyll. It has got chlorophyll, and chlorophyll has central magnesium ions. It resembles with the heme of RBCs, which have central ferrous iron instead, and almost the remaining structure is same. It has also porphyrin ring and the RBCs as well. Here, उसकी जो hemoglobin होता है उसमें porphyrin ring मौजूद होता है. तो ये इसमें there's a little bit difference between them. You have to remain in your to keep it in your mind. And one thing more is that here, so ribosome 70s and circular DNA, it means due to this region, these structures, it is the organelle of symbiotic origin along with the mitochondria. और इसके अलावा, dear students, it imparts
ग्रीन कलर टू द प्लांट्स, और इसके अलावा ये मौजूद है इन द अनराइपेंड फ्रूट्स एंड द लीव्स एंड द यंग स्टेम्स, wherever it is the color is green. So it is, लेकिन याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में वो लाइट काम आएगी जो एब्जॉर्ब होगी, जो रिफ्लेक्ट होगी वो इसका कलर को इंपार्ट करने में हेल्प करेगी। जो एब्जॉर्ब हो गई, जो इस ग्राना ने एब्जॉर्ब कर ली, इन थाइलाकॉइड्स ने एब्जॉर्ब कर ली, वो इस्तेमाल हो जाएगी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट विल गिव द कलर टू the objects in which it is present, like the leaves or the young stems, etc., etc. So this is about the chloroplast. Students, let's have a look on a few MCQs related to today's topic. So first of all, is granum is composed of at least dash thylakoids. So 15, 25, 50 or 45. Dear students, so at least 50 or 50 plus. Clear? The Calvin cycle, which is also known as dark reaction, takes place in dash of chloroplast. Thylakoid, intergranum, granum or stroma. Dear students, so dark reaction कहाँ पर होते हैं photosynthesis के? They take place in stroma. The chlorophyll resembles with heme of RBCs structurally, with a difference of central metal atom dash in heme. तो chlorophyll और उधर से heme of hemoglobin का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, सिवाय एक डिफरेंस के कि वो हीम में क्या डिफरेंस है, क्या वो जिंक सेंट्रल मेटल एटम है हीम में, मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन। जी डियर स्टूडेंट्स, सो डिफरेंस इज ऑफ आयरन. Now the lysosomes are synthesized by ref endoplasmic reticulum and pass to the Golgi complex through cis phase, trans phase, or pass through the smooth endoplasmic reticulum or the cristae. G difference. So the nearest answer is pass through smooth endoplasmic reticulum. Clear? To the trans phase. Now, lysosomes were discovered by Belgian biologist Dash in 1949. D. Dove, Pallet, Hook, or Christian Graham. So the answer is D. Dove. Christian Rene D. Dove. Another MCQ is there. Disease caused due to absence of Dash is called Tay-Sachs disease. Hexokinase, alpha glucosidase, or beta hexosaminidase, or phosphokinase. G. Dear students. So here is your answer. So Tay-Sachs is caused due to the deficiency of beta hexosaminidase present in the brain and the spinal cord cells. So it leads to Tay-Sachs disease. Another MCQ is here. Primary lysosome plus food vacuole or digestive vacuole or endosome is equal to dash lysosome. Secondary, tertiary, quaternary, or autophagosome. So primary plus food vacuole is secondary lysosome. And the lysosomes have acid phosphatases plus dash hydrolytic enzymes. 10, 20, 30, or 40. G difference. So they have 40 different hydrolytic enzymes, including proteases and carbohydrates and lipases and nucleases, etc., etc.